साइबराबाद में साइबर क्राइम के मामलात में इजाफा। प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए पेश की गई रिपोर्ट। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती ने साइबराबाद की सालाना क्राइम रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा कि कमिश्नरेट के दायरे इख्तियार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस बार साइबर जराइम के मामलात में इजाफा हुआ है। कमिश्नरेट के आमला ने पुरअमन असेंबली इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए 2 माह तक मुतासिर तरीके से काम किया। पिछले साल साइबर क्राइम के 4,850 मामले दर्ज हुए थे। इस साल 5,342 मामला दर्ज किए गए। 232 करोड़ रुपए की नकदी की धोखाधड़ी की इत्तला मिली है। 277 मंशियात के केसेस दर्ज किए गए। इस साल 567 अफराद को गिरफ्तार किया गया। साइबराबाद में माशी और रियल स्टेट के जराइम की ज़्यादा वारदातें हो रही है। पुलिस मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि इस्मत रेजी के वाक़यात में कमी आई है। 2022 में इस्मत रेजी के 316 मामला दर्ज हुए। इस बार 259 दर्ज किए गए। सड़क हादसा, कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। इस साल सड़क हादसों की तादाद 3,183 रिपोर्ट की गई है, जो कि साल 2022 के आखिरी में 3,224 के मुकाबले में कम है। इस साल शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 52,124 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 1,271 अफराद को सज़ा दी गई। इन्होंने कहा कि सिफारिशी खतूत पर कोई पोस्टिंग नहीं होगी। इन्होंने कहा कि नए साल की तकारीबात का एहतमाम करने वालों को इजाज़त लेनी होगी, बसूरत दीगर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। आइए देखते हैं इस खुसूस में प्रेस मीट के चंद खास मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और खास खबरों के लिए जेड न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। Most important thing మనకి చేయడానికి it's to see that anybody who comes to the police station has a proper disposal of the complaint. So the complaint, the proper disposal means the disposal as per law, whatever the law permits us, what rules are there in place. So we should ensure that we are able to give them a good, disposal as mandated by the law. So that is a very important priority for us. So that's something we will work very hard towards. And it may sound very simple to do that, it's just a one line, but to put the things into place, to see that everybody, right from the sector SIs to the SHOs, ACPs, DCPs, CP, everybody works towards that goal. We will try to make our best efforts for that. So that is one, adi chala important okati component ma kosam. Second, I think earlier also, and you are also all aware that Cyberabad lo economic offense, the so-called what we call commonly as white collar crime, it's pretty dominant because of various reasons. A lot of industries are there, lot of companies are there, lot of enterprises are there, and of course a lot of land issues also are there. So because of that we have a chala big component of white collar crime, and a proper disposal of white collar crime is very important because people lose a lot of money, lot of their hard earned money and their properties in that. So వాళ్ళకి ఒక ప్రాపర్ డెలివరీ ఆఫ్ జస్టిస్ మనం ఎన్ష్యూర్ చేయడానికి అది చాలా ట్రై చేస్తాం. అండ్ ఆల్రెడీ మీకు దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నాట్ అ న్యూ వన్. సైబర్ క్రైమ్ అది కంటిన్యూస్లీ ఫర్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద రైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. సో that subject will continue to remain important for us in the coming year also. Sir, announcement of the elections, enforcement of the model code of conduct, and all the check posts, all the other checking activities, and almost that entire process ran for about 2 months. So that was a big event recently for us. Dan mundu we had a lot of G20 events మన దగ్గర సైబరాబాద్లో జరిగినాయి in the last year. దాంట్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ HICCలో, ఎయిర్పోర్ట్, నోవోటెల్లో
అలాంటి ప్లేసెస్ తర్వాత రాజేంద్ర నగర్లో అండ్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చాలా ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. సో దిస్ హ్యాస్ బీన్ క్వైట్ అ ఈవెంట్ఫుల్ ఇయర్. అండ్ సైబరాబాద్ ఎప్పుడూ ఈవెంట్ఫుల్లే ఉంటుంది. సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ కీప్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కమిషనరేట్. అండ్ we have so many vital installations, so many important locations that something or the other keeps happening all the time. So from law and order perspective, it has been a very active year for us. Apart from that, of course, Cyberabad is a place where a lot of population resides, and therefore crime is bound to occur. So there has been mixed statistics icham different types of crime across different segments of people. So danki also we have been able to put in our best efforts and make some progress on that. So we the coming year hopefully we will continue to work, make course corrections ekkada maaki avasaram akkada course corrections cheyadam, whatever modifications and all required in our working as cheyadam. So we will try to do our best to do whatever it takes to keep the society in our area, the people in our area safe. So thank you. Na side nunchi I have this much only to tell you. I'll be very happy, our team is here, they'll be very happy to take any questions. आज हमारा साइबराबाद का एनुअल प्रेस मीट था, तो हम लोगों ने जो लास्ट ईयर के क्राइम स्टैटिस्टिक्स है डिफरेंट हेड्स में और डिफरेंट एरियाज़ में सब बताए. तो खासकर इस बार आने वाले साल में हमारे को इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसको वाइट कॉलर क्राइम बताते कॉमनली, उस पे साइबर क्राइम पे, उसके बाद जो ट्रैफिक, ये इश्यूज़ पे हम लोग थोड़ा ख़ास नज़र करेंगे, क्योंकि साइबराबाद बहुत ही ग्रोइंग एरिया है. इधर हर रोज़ नए नए एंटरप्राइजेज़, नए नए एस्टैब्लिशमेंट्स, बिजनेसेस आ रहे, तो ये चीज़ों की थोड़ा अटेंशन ज़रूरत है. तो इस पे हम इस साल आने वाले साल में ख़ास नज़र रखेंगे. और जो पब्लिक का खासकर जो पब्लिक जो पुलिस स्टेशन आती है अपना कंप्लेंट लेके, तो वो कंप्लेंट्स का सही तरीके से डिस्पोजल होना, फेयरली होना, बिना पार्शलिटी के होना और कानून के तहत सही होना, उस पे भी हम ख़ास नज़र रखेंगे. ठीक है.